नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am JVN Dr. Alka Jain, Associate Professor and HOD in the Department of Community Medicine and Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University. So there is a new topic for your digital session 2.0 and the topic name is diphtheria, and here it is a part of 1. Here you can see the shapes of bacilli of diphtheria, Corynebacterium diphtheriae. These are the club shapes and the ends are swollen, and mainly they are found in pairs. Now, diphtheria is an acute, highly infectious disease of preschool children caused by the Corynebacterium diphtheriae. Mainly 5 साल के पहले के जो बच्चे होते हैं 5 साल उनमें ये डिजीज ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, प्रेवलेंट होती है, और जो मेनली पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसका Corynebacterium diphtheriae है. इसकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं ग्रेजुअल राइज ऑफ टेम्परेचर, देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सीमिया and formation of a grayish yellow membrane at the site of implantation in the throat over the tonsils, pharynx, larynx with associated lymphadenopathy. And the case fatality rate is about 10%. The disease is one of the major killer disease of under 5 children, known to be existing even much before Christ was born. During 3rd century, it was described under the name Ulcera syriaca. Mainly in Greek language, diphtheria means leather. In 1884-85, Loeffler differentiated the diphtheria bacilli from diphtherids, which are pseudo-diphtheric organisms. He established the relation between diphtheria bacilli and the disease. So the name given as Klebs Loeffler bacilli to the pathogens. Now, if you talk about the magnitude of the problems, mainly it is not present in developed countries. It has been eradicated in developed countries, but still it is prevalent in developing countries. And recently, outbreaks occurred in Ukraine in 1990. Thailand and Laos showed a shift in the age incidence between 5 and 15 years. WHO reported about 5,000 deaths due to diphtheria during the year 2002. And in India, the scenario is the annual incidence has been brought down from 25,000 to less than 1,000 under the presence of universal immunization program. So you can see that it's a very beneficial effect of universal immunization program, in which children under the age of 1 are given DPT in 3 doses, and after 1 year of age they are given booster doses of DT. 2 doses are given of diphtheria and tetanus. So because of this universal immunization programs, uh, India has incidence in India has been decreased much less, from 25,000 to less than 1,000. Now, what is the agent factor? Agent factors of the diphtheria is uh, Corynebacterium diphtheriae, and it is also known as Klebs Loeffler's bacillus because of its the inventors, name of inventors. Now it is a gram-positive, non-capsulated, non-spore forming, non-filamentous, non-flagellated, and non-motile bacillus. They are some are long, thin curve with swollen ends, showing giving a club shape.
and some are shorter and stout. The bacilli always tend to appear in pairs, lying at angle, giving the characteristic appearance of Chinese letters. And a very important characteristic feature is that they contain metachromatic granules, which are absent in diphtheroid bacilli. They are both virulent and avirulent strains of दोनों तरह के वेसिलाइज होते हैं, विरुलेंट भी होते हैं और एविरुलेंट भी होते हैं। जो विरुलेंट स्ट्रेन होता है वो मेनली एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। जो फैक्टर ए होता है वो मेनली लीथल होता है, विच एंटर्स द टारगेट सेल्स एंड इट विल एक्ट ओनली व्हेन बी फ्रैगमेंट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। सो बी फ्रैगमेंट इज ए स्प्रेडिंग फैक्टर। तो दोनों ही फैक्टर का होना जरूरी है यदि किसी पर्सन को इन्फेक्ट करना है। तो ए फ्रैगमेंट तो लीथल एक्शन होता है और बी का जो होता है उसकी वजह से एंटर करता है, वो एक्ट करता है। इट मेक्स अटैचमेंट विद द सेल मेम्ब्रेन अलाउइंग द ए फ्रैगमेंट टू एंटर द टारगेट सेल्स। द एक्सोटॉक्सिन causes local tissue necrosis. So both the cumulative effect of factor A and B, diphtheroid bacilli is capable of infecting human beings. Now, the man is only the reservoir and the source of infections. A human reservoir may be a case or carrier. Case is that who has clinical sign and symptoms, and the carrier is a person who doesn't have carrier sign and symptoms, but he or she carries the causative organism of that particular disease. So, a carrier may be a temporary, like in incubatory, healthy or convalescent carriers, or a chronic carriers. Incubatory, during the incubation period, healthy means after the recovery of the disease, and convalescent during the recovery phase. The bacteria may exit from a infectious patient, and cutaneous carriers are more infectious than the respiratory carriers. For every clinical case, there are about 8 to 10 carriers. Now, what is the infective material by which infections spreads? Mainly, it is a nasopharyngeal secretions which discharge from the cutaneous lesions, and possibly the infected dust and the contaminated fomites constitutes the infective materials. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्टिव मटेरियल है वो है नेजोफेनिल सिक्रीशंस। जो भी ड्यूरिंग स्नीजिंग जो हो रहा है, कफिंग जो हो रहा है, उससे जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो मेनली जैसे कि ड्रॉपलेट में होता है, और डिस्चार्जेस फ्रॉम द क्यूटेनियस लीजन। यदि क्यूटेनियस लीजन कोई है और उसकी वहां से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी एज ए इन्फेक्टिव मटेरियल का फंक्शन करता है। एंड पॉसिबली द इन्फेक्टेड डस्ट एंड कंटामिनेटेड फोमाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द इन्फेक्टिव मटेरियल्स। नाउ द पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, this varies from 2 to 4 weeks. However, chronic carriers remains infections for several months to year. Means an infected patients can spread the causative organisms or bacilli for 2 to 4 weeks. मतलब 1 महीने तक वो एज ए इन्फेक्टिव सोर्स ऑफ रिजर्वायर रहता है। Now the host factors. Host factors are the human beings only, because the reservoir of infection and source of infection only are the human beings. So age incidence of diphtheria is high between 1 to 5 years, and it is almost nil in an infant below 6 months because of the maternal antibodies through milk. तो मेनली ये 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों में ही होता है, और 6 महीने के बच्चों में ये मेनली नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेंट बच्चे को अपनी मदर से इम्यूनिटी मिल जाती है इसके अगेंस्ट में। एंड मेनली ये दोनों में इक्वल होता है, बॉयज और गर्ल्स में सेक्स रेशियो इज इक्वल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एंड इम्यूनिटी, ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स आर रिलेटिवली इम्यून, एंड अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रन डेवलप इम्यूनिटी थ्रू सब क्लिनिकल infections. And more than 85% of immunization coverage helps in the development of herd immunity. So herd immunity develops after the immunization program. This is national immunization program. Now, how it transfers from one person to another?
And it is first of all, it's a droplet mode is the commonest way of transmission. Direct contact transmission is possible from a case of cutaneous diphtheria to a susceptible person. As I have told uh, in previous slides, that the most important mode of transmission is droplet, and the other mode is uh, through direct contact, और indirect में through fomites के हो सकता है, uh, because of possible from the recently contaminated fomites such as clinical thermometer, tongue depressor, handkerchiefs, pen, pencils, toothbrushes, cups and plates used by the patients. And transplacental transmission is not proved yet now. And transmission through animal means of epidemiological curiosity. तो मेनली यहाँ आप देखेंगे कि मेनली 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है. पहला है ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और तीसरा है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट में थ्रू फॉर्माइट्स में, जैसे कि कोई भी आपकी जो सरफेस है वो कंटामिनेटेड हो गया हो, जैसे डॉक्टर्स की जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पे आपने थर्मामीटर यूज किया हो, टंग डिप्रेसर यूज किया हो किसी एक पेशेंट को, और आपने वही यदि टंग डिप्रेसर दूसरे पेशेंट में यूज कर ली तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है. नाउ द पोर्टल ऑफ एंट्री, कि इन्फेक्शियस जो एजेंट है यानी कि बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, वो कहाँ से एंटर करता है बॉडी के अंदर. एंड दिस इज द कॉमनेस्ट पोर्टल ऑफ एंट्री इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बिकॉज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज droplet infection. So the commonest mode of portal of entry is through respiratory tract through nasal mucous membrane. Occasionally, these pathogens may enter through abraded skins and mucous membranes, either through conjunctiva or genitals, or like cuts and wounds. जैसे कि cutaneous में मैंने बताया था direct contact से जो होता है. Now comes to the pathology and pathogenesis. Having entered the body through the respiratory route by inhalation, the bacilli implants in the upper respiratory passage, either in the tonsils, nasopharynx, larynx, and multiply there, causing inflammatory reaction at the site. तो सबसे पहले nasal mucous membrane के through enter होगा, फिर उसके बाद में ये टॉन्सिल्स के अंदर जाएगा, फिर नेजोफेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, और वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा. Here you can see the picture which shows the pathology and pathogenesis of a diphtheria. And here it's a Corynebacterium diphtheriae. It's a bacteria. It produces diphtheria toxin. Itself it doesn't cause any disease, but the toxins which produced by the diphtheria is the main cause of the pathogenesis. एंड आफ्टर ये मैंने बताया था कि इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, ए एंड बी. तो ये जो ए होता है, बी इसको हेल्प करता है एंटर करने में. यहाँ पे ये ए और बी फैक्टर्स एंटर होने के बाद में ए कंपोनेंट एंटर्स टू होस्ट साइटोप्लाज्म and inactivates elongation factors 2, and after that prevents protein synthesis by ribosome and then cell death. So here it is a pathogenesis of Corynebacterium diphtheria. So it's all about the introduction and pathology, pathogenesis, or and epidemiological determinants of diphtheria. And if you have any query, please comment in the comment box. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Thank you.